Hello students, so welcome to my YouTube channel. So today we are doing the chapter 2 of science class 10, that is understanding the chemical properties of acids and bases. तो acids और bases की सारी chemical properties with reactions हम discuss करने वाले हैं. Okay, so watch the lecture till end. Before starting the video, please subscribe my channel so that you can get regular updates regarding the lectures. So we discuss acids and bases in the laboratory. Activity 2.1. So what we are basically doing here, collect the following solutions from the science laboratory. आपकी lab में basically ये सभी chemicals present होते हैं. So you have to take hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, then sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, and ammonium hydroxide. So all these you have to collect, right? And put a drop of each of the above solutions on a watch glass one by one and test with a drop of the indicators shown in table 2.1. तो अब आपको क्या करना है, you have to take a watch glass. ठीक है, watch glass में एक drop place करना है. जैसे suppose initially आपने लिया hydrochloric acid, so you have to put that in the watch glass. और फिर इंडिकेटर हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू दैट ऑल्सो. तो आप बेसिक इंडिकेटर्स यूज करोगे और इन इंडिकेटर्स में क्या चेंजेस आते हैं उससे हम नेचर ऑफ सब्सटेंस चेक करेंगे. ओके तो आप इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज करोगे? रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फिनोफ्थिलिन सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन, राइट? सो इसमें हम सब नोटिस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं फॉर पर्टिकुलर सब्सटेंसेस. जैसे फॉर एग्जांपल आपने HCl लिया तो पहले आप उसमें रेड लिटमस डाल के चेक करोगे क्या चेंज आया. यू कैन नोट डाउन हियर, लाइक यू कैन राइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हियर एंड हियर द चेंजेस इन कलर. Then for blue litmus, phenolphthalein and methyl orange respectively. Okay, so अब हमें इन इंडिकेटर से बेसिकली पता क्या चलेगा? We will come to know whether the substance is acidic or basic by this change in color. Okay, so these are some substances whose odor also changes in acidic or basic media. ठीक है, तो जो ऐसे substances होते हैं उन्हें हम olfactory indicators बोलते हैं. Okay, जिसमें odor changes होंगे. So we create a table here जिसमें हम फर्स्ट कॉलम में सारे सैम्पल सॉल्यूशंस के नेम्स लाइक लिस्ट कर देते हैं एंड देन वी सी द ऑब्जर्वेशंस. सी रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ अगर आप ये सॉल्यूशन टेस्ट करते हो तो यू डोंट सी एनी चेंज इन द कलर. रेड लिटमस का कलर रेड ही रहेगा, राइट? इन दीज 4 केसेस यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज, बट इन द लास्ट 5 केसेस आप देखोगे कि इट टर्न्स रेड टू ब्लू. तो ब्लू कलर हो जाएगा जो लिटमस सॉल्यूशन का. फाइन. सिमिलरली आप ब्लू लिटमस का चेक करो, यू ऑब्जर्व दीज थिंग्स. फिनोफ्थिलिन सोल्यूशन में कुछ केसेस में कलरलेस है, कुछ केसेस में इट टर्न्स पिंक, एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन इट टर्न्स ऑरेंज टू रेड इन few cases and it turns yellow in few cases. So these are all the observations in this table. So what do these mean? ये हम अब समझते हैं, right? See, acids का क्या नेचर होता है? Like acids turn blue litmus paper red. They do not change the red litmus paper. Red का कलर रेड ही रहेगा, बट ब्लू वाला चेंज हो जाता है रेड में and it remains colorless with phenolphthalein. Okay, and it turns methyl orange red. तो हम टेबल से ये सारा आइडेंटिफाई करते हैं कि इन केसेस में ये सब ट्रू है. तो वी फाइंड देयर आर 4 एसिड्स, HCl, H2SO4, HNO3 and CH3COOH. So these all 4 acids are identified based on these properties, right? Similarly, bases हैं. Bases की क्या property है? It turns red litmus paper to blue. It does not change blue litmus paper. Okay, it turns phenolphthalein pink and it turns methyl orange yellow. So learn all these properties. तो इसके basis पे we identify there are 5 bases: NaOH, CaOH whole twice, KOH, MgOH whole twice, and NH4OH. Now let us understand olfactory indicators. ये बहुत important होते हैं from exam point of view also. So these are the substances whose odor changes in acidic or basic media. Means जो इनकी आपको खुशबू feel होती है, that will change. Okay. हम examples लेते हैं, जैसे onion है. Onion में अगर in a basic medium, okay, the characteristic smell of onion will fade. Okay, acidic में it will retain the smell. This is the difference. Vanilla.
वनीला का बेसिक मीडियम में क्या होता है, स्मेल डिमिनिश होगी और एसिडिक में स्मेल विल परसिस्ट. क्लव, क्लव क्या होता है, लॉन्ग. ओके, बेसिक मीडियम में द स्मेल विल बिकम लेसर, ठीक है. एसिडिक मीडियम में इट इज रिटेन्ड. So these can be used by using the odor changes. Now let's understand the activity 2.2. We have to take some finely chopped onions in a plastic bag, okay, along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge, okay. The cloth strips are now can now be used to test for acids and bases. Okay. Take 2 of these cloth strips and check their odor. Okay, keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one strip and dilute NaOH solution on the other. ठीक है, dilute HCl आपको पता है ये एसिड होती है, ठीक है, तो हम एसिड यूज कर रहे हैं यहाँ, और dilute NaOH solution it is a base. Fine. Now you will rinse both cloth strips with water and again check their odor. तब अब क्या चेंजेस आपको ऑब्जर्व होते हैं ये देखना है आपको. ओके, यू ऑल्सो चेक इट विद डाइल्यूट वनीला एसेंस, क्लव ऑयल. ओके, ऑर्डर चेक करना है. फाइन. नाउ take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both the test tubes and shake well. तो अब इनका अगेन ऑर्डर चेंजेस चेक करना है. सिमिलरली आप करोगे क्लव ऑयल के साथ. फाइन. सो अब हमें देखना है वनीला ऑनियन और क्लव में से कौन से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं. ओके, थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट. सो ये एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस हैं कि अनियन लूजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन बेसिक मीडियम एंड इट रिटेन्स इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, वनीला लूजेस इन बेसिक मीडियम एंड रिटेन्स इन एसिडिक मीडियम. क्लव लूजेस इन बेसिक मीडियम, रिटेन्स इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस आया है, तो हम इन तीनों को ही अनियन, वनीला एंड क्लव कैन बी यूज्ड एज olfactory indicators. Right? Okay, now we understand that how acids and bases react with metals through an activity. ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 में या इन जनरल केमिस्ट्री में. एसिड्स और बेसेस का रिएक्शन मेटल्स के साथ, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. ओके, तो आप ऐसा अपरेटस सेट करते हो, राइट. सो व्हाट यू आर टेकिंग, आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, राइट, स्टैंड पे इसे फिक्स करते हो, देन यू ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जिंक ग्रेन्यूल्स क्या है, मेटल है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड है. तो इसके रिएक्शन से हम देखेंगे क्या होगा. अ कॉर्क इज फिटेड हियर, ठीक है, इसमें एक डिलीवरी ट्यूब हमने इंसर्ट की. हियर इज अ सोप सॉल्यूशन. ओके, so a gas will be released from here. It will go through the soap solution, and here if you check, this is a soap bubble filled with hydrogen. ये आपने कैसे चेक किया, कैंडल में पॉप साउंड. एक कैंडल लिया आपने तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विल गिव अ पॉप साउंड. तो इस तरह हम चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे अगर हम एक मेटल और एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस. ऑल राइट. So this is the basic equation. Acid plus metal will give you hydrogen gas and also one salt will be obtained. All right. तो ये compound बनेगा इनके reaction से, that is known as salt. Fine. Now just go through all the steps of this activity and this equation. Now let's see some equations like H2SO4. This is an acid. It is reacting with zinc, Zn. It is giving you ZnSO4, okay, and H2. So basically Zn is displacing hydrogen from this particular compound and forming ZnSO4. This particular thing is a salt. Okay. Another reaction, let's see, HCl is an acid, Zn is a metal. It is giving a salt, ZnCl2 is a salt and hydrogen gas again. Now HNO3, this is nitric acid. It reacts with a metal zinc. It gives zinc nitrate salt, NO2 and H2O, right? Next we have CH3COOH. This is an acid. It reacts with metal, giving a salt and hydrogen gas. Clear? Now let us understand activity 2.4. इसमें आप क्या करते हो? You place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube और आप 2 ml sodium hydroxide solution add करते हो. Warm the contents, alright, and see the observations. So basically sodium hydroxide is NaOH. You add zinc, so this is a base. Base और metal react कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? This particular compound, sodium zincate,
and again hydrogen gas is released. Okay. So now we study how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids. ठीक है, metal carbonates क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखो Na2CO3. So this is basically sodium carbonate. ठीक है, and metal hydrogen carbonates क्या होते हैं, NaHCO3 like this. So sodium bicarbonate, right? तो इसे आप किससे रिएक्ट करा रहे हो, HCl. दिस इज एन एसिड. तो जब हमारे मेटल कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म होता है, लेट्स सी. NaCl is formed. So this is a salt, H2O, water and carbon dioxide. This is a really important reaction. Again, इसमें second reaction में भी salt, water, carbon dioxide. These are released. Okay. तो ये हमने सेटअप लगाया है, जिस सेटअप के अंदर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर एडेड, और फिर हम जब ये रिएक्शन होती है परफॉर्म, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब में जाके कैल्शियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगी. तो उसका हमारा क्या इक्वेशन बनेगी, CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर प्लस CO2. इट विल गिव यू व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3, that is calcium carbonate, and water is available. Right? So learn all these equations. This is a really important experiment. See now what happens अगर आप excess carbon dioxide pass on करोगे, ठीक है, CaCO3 plus water plus again more of CO2 molecules, तो क्या form हो जाएगा, CaHCO3 whole twice, which is again soluble in water. Okay. Limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate only. ठीक है. And all metal carbonates and hydrogen carbonates, they will react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide, water. So basically 3 products you are getting. This is a generalized equation, just keep in mind. So in the next activity 2.6 we see how acids and bases react with each other. हमने जैसे स्टार्टिंग में भी देखा था, हम कह रहे थे ना acids and bases they nullify the effect of each other. तो वो कैसे होता है, let's see. Suppose NaOH, NaOH क्या होता है, बेस, प्लस HCl is an acid. ये रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, NaCl, that is a salt and water. So this is a generalized reaction. Base plus acid will give you salt plus water, right? और इस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड किया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Okay. See, this chapter is full of reactions. तो आपको ये सारी reactions you have to write and practice. Don't just read them. You will not be able to remember. इसके आप charts बना लो in a notebook. Make a table, proper beautiful table you can make, and like go through it again and again so that you can learn it. Okay. So next reaction is of metal oxides with acids, right? तो metal oxide जब हमारा एक acid के साथ react करेगा, it gives you salt plus water. मेटल ऑक्साइड का एक एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड, राइट? तो कॉपर ऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है हमारा एसिड के साथ, लेट्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, तो इट विल गिव यू सॉल्ट. सॉल्ट कौन सा मिलेगा आपको, कॉपर क्लोराइड, एंड अगेन वाटर यू विल गेट. So this is your reaction for this. CuO plus HCl gives CuCl2 plus H2, right? Now the metallic oxides are said to be basic oxides. Okay, what is the reason for this? इसमें आपका एक important question बनता है. Now since metallic oxides react with acids to give salts and water, similar to the reaction of a base with an acid. Base और acid react करते हैं तब क्या मिलता है हमें, salt और water ही मिलता है. इसीलिए metallic oxides को basic oxides भी कहते हैं, right? Now let us see the reaction of a non-metallic oxide. Okay, non-metals जो होते हैं उनके ऑक्साइड का रिएक्शन हमें देखना है बेस के साथ. All right. तो let's see what happens. Reaction between a base and an acid. Base और acid का जो reaction है वो हमें क्या दे रहा था, salt and water. Okay. Using that particular property, we can call that non-metallic oxides are acidic in nature. क्योंकि ये भी हमारा क्या प्रोड्यूस करेंगे, अगेन सॉल्ट एंड. Now we have 3 important conceptual questions. Just go through them. We will discuss them in next slides. So the first question is why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels?
आपने कभी घर पे देखा है कि आपने जैसे कर्ड को कोई ब्रास की बाउल में रख दिया हो या कॉपर बाउल में रखा हो या सम सार सब्सटेंसेस सच एज लेमन पिकल होता है, उसको आप ब्रास या कॉपर यूटेंसिल्स में नहीं स्टोर करते। ओके, सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? लेट्स सी। इसमें क्या होता है, like these like curd and sour substances, they contain acids. Okay, एसिड्स कौन सी होती हैं? लाइक कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होती है। ओके, सिट्रिक एसिड इज देयर इन अदर सार सब्सटेंसेस। तो ये इस मेटल के साथ रिएक्ट कर सकती है जो मेटल्स ब्रास और कॉपर वेसल्स में प्रेजेंट है। ओके, सो इट कैन बी हार्मफुल, राइट? हार्मफुल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे विच आर टॉक्सिक। indigestion हो गया अगर, तो it can like harm you. Okay, and it can also cause metal corrosion, तो फूड की क्वालिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं और वेसल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। That's why we should not store. Now the second question is, which gas is usually liberated when acid reacts with a metal? तो ये हमने अभी स्टडी किया है। इट इज बेसिकली योर हाइड्रोजन गैस। यू कैन गिव एन एग्जांपल आल्सो। सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड और आप उसे चेक कैसे करोगे? अगेन पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट दैट वी डिस्कस्ड। So here is the third question. We have to give reaction with metal compound A and dilute hydrochloric acid. Okay, so we are given that one of the compounds formed is calcium chloride. Okay, so metal में basically calcium present है. So we can have calcium carbonate. Okay, so reaction can be calcium carbonate plus HCl gives CaCl2 CO2 H2O, right? How will you check CO2? CO2 can be checked, it will extinguish a burning candle. आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड like burning को support नहीं करती. Okay, so if you bring a candle near the mouth of the test tube, it will extinguish. So you can balance this equation and you get proper. Thank you so much for watching the lecture, and you subscribe the channel to get updates on further like chapters and lectures. Thank you.